Hello, friends. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Synapse Academy. Jai Hind, Vande Mataram. So, friends, I hope you all are doing your mains preparation and practicing writing answers, answer writing practice କରୁଛନ୍ତି and ଆମେ discuss କରିଛି through our toppers copies ଯୋଉମାନେ ଆମ TCR student ଯୋଉମାନେ ଭଲ rank ପାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ copies ବି ଆମେ discuss କରିଛେ କେମିତି ଆମେ answer ଭଲ ଲେଖିପାରିବା ଆଜି ଆମେ discussion କରିବା OCS Mains 2022 ର GS paper 1 question କେମିତି ପଡିଥିଲା previous year question is a gold standard for any civil service exam preparation so last year main 2022 रे civil service ର pattern change ହେଇଥିଲା ଠିक ଅଛି तो सेही चेंज पैटर्न रे केमती क्वेश्चन आसीथिला सेटा डेफिनेटली आपण जानिया दरकार एंड क्वेश्चन रो लेवल केमती रहउची सेटा आपण जानिले ही नेक्स्ट एग्जाम पर प्रिपेयर करि परिबे ठीक अछि सो फॉर दैट वी हैव डिसाइडेड कि आपण माननको क्वेश्चन रो डिस्कशन प्रोवाइड करले आपण माननको गोटे आईडिया आसीबो कि हम माने केमती क्वेश्चन लेवल केमती रहउची एंड एग्जाम रे हमें केमती लिखि परिबा सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट we are today going to discuss the GS paper 1 of OCS Mains 2022 and आज हमें section A discussion करिवा and subsequent classes we will discuss the rest portions also before that we have launched our mains test series program you can join the mains test series program detail given in the description box you can check there will be test evaluation discussion answer writing improvement sessions so do check the description box for the course okay so let us start OCS Mains 2022 रे GS1 रे typical pattern syllabus follow हेइ नथिला ठीक अछि a few questions were from here and there but again syllabus जहाँ भी थाउ हमको एग्जाम रे क्वेश्चन आसले लिखिया पड़िबो ठीक अछि हम पार किछ ऑप्शन नै so let us start question 3 hours and full marks is 250 okay so let us start first see the question see there are two sections ठीक अछि group A and group B group A रे पांचटा क्वेश्चन थिला जोटा कि कंपलसरी आपण मानकू सबु करिया पड़ियो group A रे पांचटा क्वेश्चन थिला जोटा कि सबु कंपलसरी एंड आपण सबु करिया पड़ियो 1 2 3 4 and 5 and in group B okay in group B there were 17 questions out of them you have to do 15 questions okay 17 रो आपन को 15 टा करे पड़े ठीक अछि and group A is compulsory group A रे आपन को सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पड़े ठीक अछि okay group A question 20 marks and group B questions were 15 marks ठीक अछि okay so sorry 10 marks 20 marks and group B questions are 15 marks okay ठीक अछि 15 10 150 and 2500 okay 10 questions you have to do okay see first question number 1 in question number 1 is asking in what ways was India a diverse and multicultural society why was it considered so and how did it differ from other societies of Asia and Europe explain with examples okay how many parts of question are there first part in what way India was a diverse and multicultural society part 1 of the question then how did it differ from the other societies of Asia and Europe explain with examples okay ठीक अछि so first part of the question we will address in what way it was a diverse and multicultural society okay first part of the question in what ways first तामाने से पचारे छी इंडिया रे कोन कोन डाइवर्सिटी अछि जोथि पई कि हम इंडिया को गोटे डाइवर्स मल्टीकल्चरल सोसाइटी हिसाब रे काउंट करू छै ठीक अछि फर्स्ट इज योर एथनिक डाइवर्सिटी ओके जति हम इंडिया रा मैप देखिबा ओके ठीक अछि जति हम इंडिया रा मैप रफली इंडिया रा मैप हम देखु छै ओके एथनिक रे इन नॉर्थ we have Indo-Aryans in south we have Dravidians okay tikke thin kar do eta ko okay we have
Dravidians. And in the mainland India and in the northeast, we have tribals. Okay. So people of different ethnic background are there in India. North India, we have Indo-Aryans. In South India, we have Dravidians. And in mainland India, Northeast, we have tribal populations. So this is the ethnic diversity. Example, tribal population रे हमें कोई परिवार ethnic people एटी in Northeast रे को ethnic people अछंती नागा अछंती ओके mainland रे कौन tribal group अछंती example दे पर सांताल group अछंती ठीक अछि. So this is the ethnic diversity of India. Okay. Then second point is your linguistic diversity. Okay. Linguistic diversity. Okay. Linguistic diversity. Okay. Roughly हमें 22 languages को official language इतना हम आप लोगों ने कौन लिखी हुई 22 language हमें कोचे but we have roughly 19,000 plus dialects. ठीक है जी 19,000 plus dialects are there. Okay, in India, 22 language, 19,000 plus dialects. Okay, ठीक है. This is the linguistic diversity. Third is the religious diversity. Okay, you all know about religious diversity. Okay, many major religions are there in India. Okay, Hinduism, Christianity, Zoroastrianism. Okay, Islam, all these are in India. Okay. So next you can write that cultural diversity. Okay. Next you can write fourth is your cultural diversity. Cultural diversity about you can write about we celebrate different festivals, different cultures. Example दे परियो आमर दिवाली अछि क्रिश्चियन मानकर क्रिसमस अच्छी ओके सो पंजाबी मान पंजाबी जो अच्छा से सिख सिख मान जो अच्छा बैसाखी अच्छी सो डिफरेंट फेस्टिवल्स आर देयर इन इंडिया सो दिस इंडिकेट्स योर कल्चरल डाइवर्सिटी ओके इवन इन दिवाली आल्सो सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओके ठीक अछि so these are few points which you can write about the diversity and multicultural society of India okay ठीक अछि next part of the question is that how it differ from other societies of Asia and Europe okay सेटा को हम जिबा how it differ from other societies of Asia and Europe देखो गोटे एटी गोटे कांसेप्ट हम देखिबा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन societies in Europe and India okay दीटा जिंस पचारि से पचारि इंडिया सोसाइटी वर्सेस यूरोपियन सोसाइटी एंड अदर सोसाइटीज ऑफ एशिया अदर सोसाइटीज ऑफ एशिया में कहे गले जापान चाइना ओके दीटा जिंस लिखिया पड़ियो जे हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर सोसाइटीज ऑफ यूरोप एंड एशिया सो आमे जदी यूरोप रे देखिबा देखो गोटे कंट्री रे गोटे पॉलिटिकल बाउंड्री अछि ओके तो जदी गोटे कंट्री रो एथनिक आइडेंटिटी एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पॉलिटिकल बाउंड्री भितरे ही रहिला ताले सेटा होमोजेनियस हे जिवो ठीक अछि इट इज ए होमोजेनियस सोसाइटी ता माने जो पॉलिटिकल बाउंड्री लोक मान रहउचंती से मानकर एथनिसिटी गोटे से मानकर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी गोटे किंतु इंडिया रे से केस नु ओके इंडिया रे पॉलिटिकल बाउंड्री गोटे हेइथिले भी हमर एथनिक आइडेंटिटी अलगा रिलीजन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी अलगा डिफरेंट ठीक अछि बट यूरोप से जिंस यू कैन राइट दैट in Europe the political boundary conforms with the ethnic and linguistic identity okay so you can write here point कहि दोछ अपन मन रखिबे in Europe the political boundary conforms with the ethnic and linguistic identity ठीक अछि ता माने रिलेटिवली होमोजेनियस हे गला ठीक अछि गोटे ठीक अछि नेक्स्ट थिंग यूरोपियन सोसाइटी हम आगे यूरोपियन डिस्कस करबा तापर चाइना जापान बुझिबा
First point, okay. European society more or less individualistic in comparison to Indian society. More or less individualistic. ठीक ଅଛି? Then, how European society differ from India in terms of gender relations? Gender relations, okay. Indian society was more or less a matrilineal society. Okay. Whereas this is Indian society. Okay. Whereas European society was male dominant. Okay. Matrilineal society, whereas European society was male dominant. ठीक ଅଛି? Okay. So, European society was individualistic, whereas Indian society it attached to family and society. Family and society attachment India रे अधिक देखा जाए than European society. ठीक ଅଛି? So this is the basic difference between European society and Indian society in terms of first European society political boundary conforms with the ethnic and linguistic identity. Then second individualistic, whereas Indian society is not individualistic. Second gender relation रे हमें देखिबा Indian society was mostly matrilineal and European society is a male dominated. ठीक अछि? Second comparison is between societies of Asia. एशियर सोसाइटी कौन थला सपोज एग्जांपल हमें चाइना एग्जांपल नबा किंबा जापान रो एग्जांपल नबा ओके मोर और लेस linguistically and ethnically they are homogeneous. Ethnically and linguistically more or less both these societies are homogeneous. ठीक अछि? So this is the answer to the question. Points, only remember the points. ठीक अछि? हमें डिस्कशन करले फास्ट इंडियन सोसाइटी रो डाइवर्सिटी केमति रहउची, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी केमति रहउची, कल्चरल डाइवर्सिटी केमति रहउची, ओके, एथनिक डाइवर्सिटी केमति रहउची, and how it was different from European society and your contemporary societies of Asia, example China or Japan. ठीक अछि? चलो next question. Question number 2. ठीक अछि? Question number 2. You type in the chat box. Question number 2. What were the causes? We address the question completely. Explain the examples. Example भी देई परिबा हमें. Suppose गोटे example मु देली. अपूर्व क्वेश्चन गोटे example दोछि. कि सपोज हमें केरला नबा. ओके. केरला गोटे स्टेट जोटा कि हम पॉलिटिकल बाउंड्री रहउची. ओके. तार डिस्टिंक्ट लैंग्वेज अछि. डिस्टिंक्ट कल्चर अछि. ठीक अछि? सो गोटे पॉलिटिकल बाउंड्री रे डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करूची. ओके. ठीक अछि? चलो. Question number 2. What were the causes and consequences of Odisha famine of 1866? Discuss in the light of the following. देखो से पचारछि in the light of the following. आपण माननको ए लाइट रे डिस्कशन करिया पड़े. ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ फोर्सिबली एक्सट्रैक्टिंग एग्रीकल्चरल रेवेन्यू माने ब्रिटिश पॉलिसी जो ब्रिटिश माने जो फोर्सिबली एग्रीकल्चर रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करथले ता पई केमिति तार कॉज कोन तार कॉन्सिक्वेंस कोन हला. Then heavy dependence of agriculture in India on the forces of nature. माने नेचर ऊपर जेतु डिपेंडेंट थिला एग्रीकल्चर इंडिया रे तो ता पई केमिति फैमिन हला एंड कंप्लीट तार फैमिन हला पर तार कॉन्सिक्वेंस कोन हला तो हमको एटा डिस्कशन करियार अछि. ठीक अछि? क्वेश्चन बुझी पारलो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस. कॉजेस भीतर हमें फोकस करबा फोर्सिबली एक्सट्रैक्टिंग एग्रीकल्चर रेवेन्यू, हेवी डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर on India or natural forces. Then we will write the consequences. This will be the structure of the answer. Okay, question number 2. ठीक अछि? 1866 famine. ठीक अछि? Okay. तो 1866 रे जो famine हला तार कॉजेस कोन कोन होला तब तापे तुमको गुटे स्टोरी मन रखिया पड़े पिला माने. ओके. फैमिन पूर्वरु 1865
कि 1866 पूर्व 1865 मसीह कौन है 1865 मसीह हेतिला अर्ली मॉनसून अर्ली मॉनसून हेतिला अर्ली मॉनसून हेगला पर कौन हैला रेनफॉल कमी गला ठीक अछि तो रेनफॉल कमी गला तापर हैला ड्रॉट यूजुअली देखिबो तमे जेतबेले गोटे फैमिन जेतबेले आसे दुर्भिक्ष जेतबेले आसे ता पूर्वरु ड्रॉट आसे ठीक अछि अनावृष्टि ओडिया को अनावृष्टि हैला ड्रॉट हैला तापर फैमिन हैला ठीक अछि ओके दिस आर जियोग्राफिकल रीजन ठीक अछि सो यू कैन राइट इट इन द मॉनसून फेलियर हमें लेखा हला कोथरे कि नेचुरल फोर्सेस ऊपर हमें केमे डिपेंडेंस थिले सेति में हमरो फैमिन हैला तो एटा मॉनसून फेलियर हमें लिख परिबा पॉइंट नंबर 1 कि 1865 रे अर्ली मॉनसून हैला ड्रॉट हैला तापर फैमिन हैला ठीक अछि पॉइंट नंबर 2 पचार छी extraction of revenue okay exploitative revenue policy of British तो जेते बेले आमे ब्रिटिश माने कोन कले ब्रिटिश माने हाई रेवेन्यू रोथले फास्ट तो से माने हाई रेवेन्यू रोथले ओके हाई रेवेन्यू थ्रो जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स सेकंड से माने कोन करथले दे वर प्रमोटिंग कैश क्रॉप्स like what indigo okay cash crops like indigo ओके जदि कैश क्रॉप कल्टीवेशन हला ताहले कोन हबो फूड ग्रेन विल बी लेस फूड ग्रेन कल्टीवेशन कमी जीवो ओके फूड ग्रेन कल्टीवेशन कमी जीवो फूड ग्रेन कल्टीवेशन कमी गले जति के रिक्वायरमेंट फूड अछि सेटा कमी गला ठीक अछि हाई रेवेन्यू देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ठीक अछि अच्छा देन थर्ड जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थिला ठीक अछि that ignored the early warning जो थिला जो ड्रॉट वार्निंग था the British administration ignored that okay तो अर्ली जो स्टेप नबा कथा ब्रिटिश माने सेतबेले जो रेवेन्सा थिले टी रेवेन्सा अर्ली जो स्टेप नबा कथा फूड ग्रेन स्टोरेज पाई किंबा डिस्ट्रीब्यूशन पाई सेटा से मन नेलेनी so they ignored the early warning and that negligence was responsible for famine in such a large scale तो सेठी कोन कले अर्ली वार्निंग से इग्नोर कले आउ सफिशिएंट इंपोर्ट कले import was not sufficient rather than कोन होतला एक्सपोर्ट होतला बुझलो कि नहीं इंपोर्ट सफिशिएंट तो होनथला rather than एक्सपोर्ट होतला कोठी के एक्सपोर्ट होतला anybody if you know कोठी के एक्सपोर्ट होतला फूड ग्रेन उडा को फूड ग्रेन कोठी के एक्सपोर्ट होतला सी जेते बेले हमरो हमरो तेलंगाना ओके तेलंगाना proximity to ओडिशा ओके सेटु जो आस्तले कुमुटी माने कुमुटीज businessman okay this is exactly written in the one article okay ओडिशा रो राइस रो हेवी डिमांड थिला सेते बेले तो से माने कोन करथले 1865 आडू ठीक अछि से माने कोन करले कुमुटी माने ओडिशा मार्केट को आसिले ओके दे केम टू ओडिशा मार्केट एंड से माने बहुत जिंस नै गले बहुत फूड राइस ग्रेन से माने बाहर को नै गले एक्सपोर्ट कर देले तो इट वाज एक्सपोर्टेड ठीक अछि ओके पूरी गोटे पोर्ट थिला एक्सपोर्ट में थिला ओके कटक रे महानदी पाखरे सेठू भी एक्सपोर्ट होतला ठीक अछि तो कोमोडी माने आसी कि बहुत गुडा फूड ग्रेन ओडिशा मार्केट रो एक्सपोर्ट करी नै गले ओके दैट वाज द रीजन व्हाई देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ठीक अछि ओके देन आउट कोन थिला होर्डिंग भी गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट थिला HOARD होर्डिंग बहुत फूड ग्रेन को होर्डिंग कर देला कला बाजारी कर रखि देले आ छाडी ले ट्रेडर माने ठीक अछि दैट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर योर famine ओके एंड नेक्स्ट होची देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट
on agriculture रे किछि इन्वेस्टमेंट रहलानी irrigation no investment on irrigation रे भी किछि इन्वेस्टमेंट रहलानी ओके for that matter there is famine जदि हमें summarize करिवा if we summarize the famine causes okay decline in output एतिके मन रख output decline माने agricultural output decline कला and टी रेभेन्सा गोटे बढ़िया सेतबेले गोटे इवेंट हेतला टी रेभेन्सा कहितले जे आम पाखरे 2.5 मिलियन लोकन पई सफिशिएंट फूड अछि ठीक अछि बट दैट रिपोर्ट वाज एब्सोल्युटली बेसलेस ठीक अछि जेतेबेले आ गोटे फैमिन हिस्ट्री फैमिन गोटे रिपोर्ट आसिला 1885 आडको ओके सेतेबेले लेखा लेखा से रिपोर्ट लेखा हेतला कि टी रेभेन्सा कैलकुलेशन बहुत ही माने एरोनियस थिला जोथि पई एते लोक मले ओके so that was output decline gote factor output decline then second was export and hoarding by zamindars and landlords okay zamindars and landlords export hotla plus hoarding hotla by zamindars and landlords okay third there was less investment on agriculture infrastructure hela agriculture irrigation hela okay there was less investment okay ठीक अछि there was less investment on agriculture okay then आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस थला एटा बहुत कम जगह आपण देखिबे लाइसेंस फेयर एटा कोन लाइसेंस फेयर पॉलिसी माने कोन लाइसेंस फेयर पॉलिसी माने कोन लाइसेंस फेयर पॉलिसी माने गोटे मार्केट रे गवर्नमेंट रो बहुत कम इंटरवेंशन रहे प्राइस राइज हैला फॉल हैला एथरे गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन किछ रहइबोनी ठीक अछि सेते बेले ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड दैट पॉलिसी लाइसेंस फेयर पॉलिसी ओके से लाइसेंस फेयर पॉलिसी जो हैला ताकू जो प्राइस राइज हैला ताकू चेक करिया पई ब्रिटिश माने कोनोसी स्टेप नेले नै दे डिड नॉट टेक एनी स्टेप ओके दे डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू चेक द प्राइस rise ठीक अछि that was the reason then next come to consequence कोन हला you all know consequence first 1 million people died ठीक अछि सेकंड कोन हला लोक तो मरि गेले 1 million people मरि गेले ठीक अछि इकोनॉमिक डिक्लाइन ओके सोशल इंपैक्ट कोन इकोनॉमिक इंपैक्ट कोन हला इकोनॉमिक डिक्लाइन एम साइन दे दो ओके इकोनॉमिक डिक्लाइन ले कोन हला एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ओके स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिला स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर हला ठीक अछि सोशल इंपैक्ट कोन हला ओके सोशल इंपैक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट એટલે इंपैक्ट हमें लिखिबा सोशल इंपैक्ट कोन हला सोशल इंपैक्ट होची डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली माने सब डिसइंटीग्रेट हे गले की कुआडे गले तार पत्ता रहिलन डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली एंड डेमोग्राफी ऊपर भी इंपैक्ट पड़िला फैमिन रो इंपैक्ट ऑन डेमोग्राफी ओके ठीक अछि इकोनॉमिक इंपैक्ट सोशल इंपैक्ट तापरे इंक्रीज इन डेप्थ बढ़ला 5 नंबर पॉलिसी चेंजेस कोन हला पॉलिसी चेंजेस फैमिन परे ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स फॉर increase investment in agriculture infrastructure बढ़ाया पई irrigation promote करिया पई ओके ठीक अछि British government took many steps so these were the consequence of okay अच्छा एठी हम लिखि परिबा कि इंडेप्टनेस ले कोन हला
पॉवर्टी ओके इंडिपेंडेंस काई हला लोक माने जाई कोन कले लैंडलॉर्ड मानकठू मनी लेंडर मानकठू पैसा नहीं के आसिले ठीक अछि एंड पॉलिसी चेंजेस रे एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट पे पॉलिसी चेंज हला आउ फैमिन पे कंपेंसेशन एंड गोटे फैमिन कमिशन दिया गेला फैमिन कमिशन फैमिन कमिशन दिया गेला की फैमिन कमिशन हेड करथिले हु हेडेड द फैमिन कमिशन एनीबॉडी इफ यू नो एनीबॉडी सर जॉर्ज कैम्पबेल GORGE कैम्पबेल जॉर्ज कैम्पबेल हेडेड द फैमिन कमिशन ठीक अछि चलो सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 ओके ठीक अछि चलो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 what is slum inclusive development will this lead to a sustainable urban development discuss two parts of this question okay two parts of this question okay two parts of this question what do you mean by slum inclusive development okay and how this will lead to urban development okay so let us discuss what is slum inclusive development question number 3 definition definitely लिखियो पड़ियो slum inclusive development or definition कोन slum inclusive development okay देखो slum inclusive development माने आमे गोटे एंती पॉलिसी करिवा जो थरे कि देखो केमती डेफिनेशन फोपाड़िबो परीक्षा रे एमती पॉलिसी करिया जो थरे कि स्लम टा मेन अर्बन एरिया रे इंटीग्रेट हबो सरला slum inclusive development means policy actions which integrate the slum into mainstream urban areas as simple as that okay हेले कौन हबो the slum inclusive development will cause a balanced and harmonious society सरला तम डेफिनेशन हे गेला तमरा फोपाडिया भी हे गेला डेफिनेशन हला कोडी लेखा है नि से माने ए डेफिनेशन कोन बट एटा ही अब लेखा हो ठीक अछि परीक्षा रे टिके इंटेलिजेंट थ्रोइंग दरकार ओके इंटेलिजेंट फोपाडिया एमती केही नांती जो माने सब जानि परीक्षा लिखि पड़े आसुंती ओके तो सेमिति जमा भावनी कि हमको बहुत के जानिया पड़ो मेन एग्जाम लिखिया ओके इंटेलिजेंट गेसिंग इंटेलिजेंट थ्रोइंग ओके slum inclusive development means policy actions that are aimed towards integrating the slums into mainstream urban areas which will lead to balanced and harmonious society बढ़िया definition ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कोन पचला बाबा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पचला will this lead to a sustainable urban development मना करे किछि रीजन ही नहीं हबो तो जेमति लव ओके yes this will lead to a sustainable urban development ठीक अछि देन जदी हबो केमिति हबो को भाई खाली कह देल तो हबो नी केमिति हबो how this will lead to sustainable urban development ठीक अछि फर्स्ट how short form लिखि दोछि how this will lead to sustainable urban development okay how first social inclusion माने कौन भाई सोशल इंक्लूजन माने होचे इरेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल धनी गरीब महिला पुरुष प्रौढ़ युवक जे भी हो ठीक है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस everybody will be integrated into the mainstream urban society ठीक अछि first point is social inclusion okay second improved
लिविंग कंडीशन ओके सस्टेनेबल अर्बन जदि स्लम आम करवा ताहले लिविंग कंडीशन भी बढ़िबो लोक मानकर ठीक अछि तो से माने कोन हेबे स्लम डुलर जो मान अछंती से मानकर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िबो ओके जदि लिविंग कंडीशन बढ़िला से मानकर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िबो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िले ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट हबो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट हेले हमर एचडीआई वैल्यू बढ़िबो ओके एचडीआई वैल्यू बढ़िगला जा हेला कोन डन अ ग्रेट जॉब ठीक अछि अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड सोशल गला लिविंग कंडीशन गला इकोनॉमिक बेनिफिट रे कोन हबो भाई सुनो इकोनॉमिक बेनिफिट रे जो माने स्लम रे रहउछंती जदि सस्टेनेबल स्लम डेवलपमेंट हबो सेमानकर इकोनॉमिक बेनिफिट हो सेमाने मनी पाइबे ओके देन प्लस सेमाने जो इकोनॉमिक आउटपुट देबे दैट विल हेल्प द अर्बन एरियाज आल्सो ओके ठीक अछि तो हम गोटे सपोज गोटे सेमानकु गोटे धंदामूलक शिक्षा देले सेमाने काम कले निजे पैसा पाइले प्लस तांकर एफर्ट द्वारा से अर्बन एरिया रो डेवलपमेंट हैला सो इट इज ए टू वे बेनिफिट बुझिगला इकोनॉमिक बेनिफिट इट विल लीड टू अर्बन प्रॉस्पेरिटी ओके then number 4 they can be made an integral part of urban resource and waste management बहुत इंपोर्टेंट टर्म एटा भाई ठीक अछि काहे कि ना अर्बन वेस्ट जो एरिया रे गदा होची सेठी ही स्लम गुडा जनरल थाए ओके तो जो माने स्लम रहउछती सेमानंकु आमे ऑनबोर्ड नेले अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से ही परिबो अर्बन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक से ही परिबो ठीक अछि तो तणु दे कैन बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ठीक अछि अच्छा देन फिफ्थ रे कोन लिखिबा फिफ्थ लिखिबा जे अर्बन प्लानिंग सपोज आमे गोटे एग्जांपल दबा कि अर्बन प्लानिंग रे केमति आमे स्लम ड्वेलर मानको इंक्लूड करि परिबा अर्बन प्लानिंग ओके तमे एबे जानि थिबो गोटे महाराष्ट्र रे हमर अछि धारावी स्लम ठीक अछि धारावी स्लम एशिया लार्जेस्ट स्लम सेठी कोन होची धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोन चलची से मानु घर दिया सुनछ हो ठीक अछि तो अर्बन प्लानिंग रे सेठी माने से मानु घर दिया हो तो किछि लोक अपोज भी करिवे काहे कि ना एठी घर रहले हमर जागा जीवो कि हमर घर जीवो कि हमर पार्क पळेबो हमर रास्ता पळेबो ठीक अछि तो एठी गोटे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन तैयार हुए ठीक अछि तो अर्बन प्लानिंग रे we can take the slum dwellers we can take the societies that represent the mainstream urban society समस्त को ऑन बोर्ड नै कि गोटे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करी कि समान भीतर हम अर्बन प्लानिंग को आगु को नै परिबा सो दिस यू कैन साइड दैट एग्जांपल आल्सो ठीक अछि कि धारावी डेवलपमेंट स्लम जो धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होची ओके दैट इज ए माने ए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एम टू सेटल the dwellers of the largest slum in the Asia okay ठीक अछि so you can cite this example so next पचारची कि डिस्कस पचारची क्वेश्चन तो challenges हम लिखियो एट कि व्हाट आर द challenges खाली तो कहि देला हमनी कि स्लम डेवलपमेंट रे कोन कोन करि परबा में challenges कोन कोन अछि ए प्रोसेस रे हम पई चैलेंज कोन कोन रहइबो ठीक अछि पाजी से होची पैसा फाइनेंशियल चैलेंज this will require significant financial and resource flow from the government financial challenge जोटा कहली conflict जे मेन स्ट्रीम अर्बन रेसिडेंट जो मान रहउछंती प्लस स्लम ड्वेलर से मान भीतर conflict सेटा भी गोटे चैलेंज ओके से मान अपोज करबे काहे कि एमान हिट रहबे ठीक अछि सेटा भी मैनेज करियो पड़िबो थर्ड थिंग कोन कि coordination between different agencies okay coordination between center state coordination between agencies of interstate agencies जो माने स्टेट भीतर भी अछंती से एजेंसी मानक भीतर कोऑर्डिनेशन भी इंपोर्टेंट ठीक अछि अच्छा सो देन फोर्थ इज
वुमेन एंगल भी लिखिया पड़िबो एठी कि इंक्लूसिव स्लम डेवलपमेंट रे वुमेन मानकर पार्टिसिपेशन एजुकेशन से मानकर एम्पावरमेंट बहुत इंपोर्टेंट एमिति न हो कि द सस्टेनेबल डेवलप अर्बन सस्टेनेबल स्लम डेवलपमेंट शुड नॉट एक्सक्लूड वुमेन ठीक अछि सो एंड आउट जिनस होछि कि देयर शुड बी सपोर्ट फ्रॉम civil society organizations okay other NGOs okay so all these organizations support is also necessary ठीक है conclusion तुम लिखि परियो okay so for sustainable slum development there is a need for coordination among the central agencies state agencies the voluntary organizations NGOs and civil society ठीक अछि चलो अच्छा एठी आमे वैल्यू एडिशन करिया पई ए आंसर रे किछि एग्जांपल देई परिबा एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल स्लम डेवलपमेंट रो ठीक अछि सपोज आमे कहले कि ओडिसा गवर्नमेंट रो एग्जांपल देखो मुक्ता MUKTA मुख्यमंत्री कर्म तत्परता अभियान मुक्ता स्कीम कोन होय मुक्ता स्कीम इज द अर्बन काउंटर पार्ट ऑफ MG नरेगा टा कोठी इंप्लीमेंट होची गां रे ठीक अछि मुक्ता स्कीम कोठी इंप्लीमेंट होची शहर रे तो मुक्ता स्कीम इज द अर्बन काउंटर पार्ट ऑफ MG नरेगा सेकंड इज वसुधा स्कीम इज द to pipe for the piped water supply ठीक अछि piped water supply then habitat award पाइछि हम स्टेट रो गोटे मिशन जागा मिशन UN habitat award ओके जागा दवा पे स्लम डेवलपर मानक ठीक अछि all these examples also you can cite ठीक अछि चलो next question we will discuss So in slum issues, we can link in push and pull factor, but factor eti pachani na. You are telling that we can link pull or push and pull factor, but eti push pull factor pachare eti alga inse pachare. Sustainable development केमती करियो. Okay, ठीक अछि. Next question. Next question. Do you think sustainable development goals targets are achievable? If yes, how we going to achieve it? If not, what are the obstacles to achieve it? बड़ा क्वेश्चन ठीक है से पचरला कि तमे भाबुछ कि आपण लेखाय जोड़िया रे आपण माने भाबुचंती कि स्थायी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओके एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को धारणीय विकास लक्ष्य भी कहा जाय धारणीय सस्टेनेबल धारणीय विकास लक्ष्य गोल हासिल होई परिबो कि जदि हां आमे एबा किपरि हासिल करि परिबा जदि नुहे या को हासिल करिया बे बाधा सब कोन बड़ा क्वेश्चन ठीक अछि अच्छा सो नेक्स्ट अच्छा तो एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कौन लिखिबा एक क्वेश्चन रे हमें इंट्रोडक्शन लिखिबा द क्वेश्चन नंबर 4 यस क्वेश्चन नंबर 4 रे हमें इंट्रोडक्शन लिखिबा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केबे हितला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केम आफ्टर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रो टारगेट ईयर थिला 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो सरीला तापर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आसिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हैला 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टारगेट ईयर होची 2030 ठीक अछि सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एटा कोन यूनाइटेड नेशन adopted a universal framework okay the united nation adopted an universal framework consisting of various goals to eradicate poverty, protecting the planet, and providing quality life to people. This is the simple definition. In 2015, United Nations adopted a framework consisting of many goals and targets to eradicate poverty, protecting the planet, and improving the quality of life of the people. That are called as sustainable development goals. The target year to achieve the sustainable development goals is 2030. This is the simple introduction, as simple as it can be possible. ठीक अछि बहुत बढ़िया चलो then पचारिछि can you think that sustainable development goal can be achieved? You have to be optimistic. से पचारि जदि नुह ताल रीजन को जदि हां ताले केमिति अचीव कर परिया ठीक अछि त आमे सब ऑप्टिमिस्टिक हवा बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर ठीक अछि तो आमे लिखिबा
how, yes, sustainable development goal can be achieved. How they can be achieved. Okay, point number one, how they can be achieved. Okay, first is sustainable development goals ସେତେବେଳେ achieve କରା ହେଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ global cooperation ରହିବ. very very important. global cooperation ରହିବ. ଗୋଟେ example ବି ଆମେ ଦେଇ ଏଠି ଯଦି global cooperation ନ ରହିବ ତାହେଲେ sustainable development କେମିତି achieve ହେଇ ପାରିବ. ମଝିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ୟୁଏସଏ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ୟାରିସ କ୍ଲାଇମେଟ ଟ୍ରିଟିରୁ ବାହାରିଛି. ଠିକ ଅଛି, ପ୍ୟାରିସ କ୍ଲାଇମେଟ ଟ୍ରିଟି ଯୋଉ ଅଛି ତାରୁ ମୁଁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ତାର ରହିବା. ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏତେ ବଡ ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଓକେ, ଯଦି ପ୍ୟାରିସ କ୍ଲାଇମେଟ ଟ୍ରିଟିରୁ ବାହାରି ଯିବ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଦେଶ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଆଇଲାଣ୍ଡ ବୁଡିଗଲାଣି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଚିଭ ହେଇପାରିବ. That's why global cooperation is important. Okay, ତ global cooperation ନହେଲେ ଆମେ SDG को achieve କରି परिवा नाही. ठीक ଅଛି, so global cooperation example ଆମେ ଦେଇ परिवा. Example Paris climate treaty. Paris climate agreement. Okay, Paris climate agreement. Paris climate agreement represent which sustainable development goal? Prelim रे भी भला क्वेश्चन पड़ियो भाई. SDG 13. Okay, देई दबो मैचिंग दे दबो को माने स्कीम को एसडीजी को रिप्रेजेंट करछन. एसडीजी 13. ओके, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रो एम कोन? रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जीएचजी एमिशन कमे पे. नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल कोऑपरेशन एग्जांपल जानले आमे. ठीक अछि, सेकंड एनीबॉडी ऑफ यू प्लीज रेस्पोंड. ओके, ठीक अछि. अच्छा, various policy integrations. Okay, various policy integrations. Example, various policy integration or policy actions. Policy action, suppose आमे कहबा कि स्वच्छ भारत अभियान. Okay, स्वच्छ भारत अभियान. यदि स्वच्छ भारत अभियान आमे देखुचे, स्वच्छ भारत अभियान conforms to which sustainable development goal? Anybody? Chat box रे. SDG नंबर केते? स्वच्छ भारत अभियान SDG 6. SDG 6 clean water and sanitation. SDG 6 clean water and sanitation. ओके, तो पॉलिसी एक्शन रे हम स्वच्छ भारत अभियान देखि परिबा, लिखि परिबा क्लीन वाटर सैनिटेशन एक्सेस, ओपन डिफिकेशन फ्री, ए जो लिखि परिबा ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री. थर्ड पॉइंट आउ कोन लिखि परिबा हम? ओके, आउ कोन लिखि परिबा? सी private sector engagement. This should be written, rather must be written. काहेकि ना only government cannot achieve the sustainable development goals. Private sector involvement or participation. Private sector participation. ठीक अछि, काहेकि ना various sectors like your health, education need private sector participation. काहेकि देखो गोटे बहुत बढ़िया एग्जांपल दो तुमको. आगुरु थिला BSKY स्कीम. ठीक अछि, आगुरु थिला BSKY स्कीम, तार नेम चेंज हे कोन हेछि? BSKY स्कीम. ओके, एनीबॉडी व्हाट इज द नेम? अच्छा, बी ता भीतर तुम लिखो BSKY स्कीम रे कोन हेछि कि जने BSKY कार्ड जे पाखर अछि से जीवो गोटे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल को, गोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को भी जाई सेठी तारो हाई एंड ट्रीटमेंट करै के आसे, ताकू पैसा दबा पड़िबो. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स in health for all. Okay, yes, very good. Gopabandhu Jan Arogya Yojana. Name has been changed to Gopabandhu Jan Arogya Yojana. ठीक अछि, तो बुझी परला बे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन माने कोन? BSKY कार्ड रे तुम जाउ प्राइवेट हॉस्पिटल को मागना ट्रीटमेंट पाई के आछो, सेठी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन न होइता हेल्थ सेक्टर रे एटा अचीव हे परथांदा कि हे परथांदा. सो प्राइवेट सेक्टर अगेन
एजुकेशन फील्ड रे भी सेम जिंस हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रे ठीक अछि गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी करूछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानकर पढिया पे ठीक अछि सो SDG this conforms to education conforms to SDG 4 SDG 4 okay SDG 1 is no poverty SDG 4 quality education and SDG 3 is health and well-being minimum sustainable development goal numbers you have to remember काहे ना सेटा हमको लेखिया पड़ियो परीक्षा खाता रे ठीक अछि अच्छा ठीक अछि आ गोटे कोन एटा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन गला आउ गोटे वे जोटे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करि परिबा इज 5 इज सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन अच्छा गोटे सिविल सोसाइटी अछि जोडा के काम करूची एजुकेशन फील्ड रे ता नाम होची प्रथम ओके एनीबॉडी कैन टेल मी गोटे प्रथम गोटे रिपोर्ट बाहर करे ठीक अछि प्रथम गोटे रिपोर्ट बाहर करे एनुअली रिगार्डिंग एजुकेशन से रिपोर्टर ना की जानि छ प्रथम गोटे एनजीओ जे कि गोटे रिपोर्ट बाहर करे ASER annual survey of education report okay ASER okay तो सेतरे रिपोर्टर देखाय थाए पिला मानकर लर्निंग स्टैंडर्ड केते पिला मानकर माने मैथमेटिकल स्किल केते पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग केते एवरीथिंग इज डिस्प्लेड इन दैट रिपोर्ट एज अ रिपोर्ट ओके एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बाय प्रथम सो एमाने कोन करछोदे सिविल सोसाइटी इज एक्टिंग एज ए विजिलेंट कि गवर्नमेंट केते प्रोग्रेस कला एसडीजी रे ठीक अछि से माने कंट्रीब्यूट भी करछन से विजिलेंट हिसाब रे काम करछन ठीक अछि सो example you can give that pratham NGO releases ASER as a report okay so these are ways with which we can and last को गोटे माने जोटा कि सबुथरे लिखि पड़ो पॉलिटिकल विल ओके हम यदि किछि लिखिया को नै लिखि दो पॉलिटिकल विल ओके सबुथरे लिखा पड़ो पॉलिटिकल विल सब दरकार ठीक अछि चलो तो these are few things by which we can achieve the sustainable development goals okay question को बजरा इतला how we are going to achieve it हमें लिखिले how you are going to achieve it ठीक अछि चलो okay next question number 5 outline the significance of भितरकनिका national park भितरकनिका जातीय उद्यान रो तात्पर्य संपर्क रे आलोचना करो question number 5 भितरकनिका जातीय उद्यान रो तात्पर्य संपर्क रे आलोचना करो ठीक अछि अच्छा भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इंट्रोडक्शन लिखियो भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड इन केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ओके इज वन ऑफ द बायोडायवर्सिटी रिच एरियाज ठीक अछि भितरकनिका नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बायोडायवर्सिटी रिच एरियाज फर्स्ट सेटिक अछि न why important first there is mangrove समस्त जानछो mangroves हेन्ताଳ वन ठीक अछि हेन्ताळ वन भितरकनिका mangroves are second largest mangrove ecosystem after सुंदरबन डेल्टा ओके सुंदरबन डेल्टा रे जो मैंग्रोव अछंती तापरे इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया ठीक अछि मैंग्रोव इकोसिस्टम इन भितरकनिका helps to control the helps to protect the coastal protection okay prevent soil erosion give shelter to various biodiversity flora and fauna मानकु से रेस्ट दियंती वेरियस फ्लोरा भी ग्रो करंती सेठी हेंताळ मनरे ठीक अछि तो फ्लोरा फाना बायोडायवर्सिटी सॉइल इरोशन कोस्टल प्रोटेक्शन ए सब जिंस लिखिबो आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस एठी होची डिफरेंस आंसर राइटिंग रे कि कंटेम्पररी जिंस केम लिखिबा एबे गोटे साइक्लोन आस्तला जोटा को मैंग्रोव इकोसिस्टम पई बेसी हैम्पर करि माने हार्म करि पल्लानी केंद्रापड़ा तो साइक्लोन ना कोन हां ठीक अछि बहुत बढ़िया दाना ओके ओके mangroves helped to reduce the impact of cyclone Dana in Odisha ठीक अछि बस
आंसर इज ऑलवेज शुड बी अपग्रेडेड काली मु भीतर कनिका लेखुतली अलग जिनस आज गोटे एग्जांपल पाइले दाना आनिकी थोइबी ठीक अछि चलो सो फास्ट होची मैंग्रोव इकोसिस्टम ठीक अछि देन सेकंड पॉइंट इज रीच इन बायोडायवर्सिटी reach in biodiversity भीतर कनिका ओके सेम जिंस फ्लोरा फौना मेन जिंस अछंती कोन बायोडायवर्सिटी मेन सेठी अछंती के माइग्रेटरी बर्ड नेटिव बर्ड भी अछंती ओके माइग्रेटरी बर्ड भी अछंती आसंती ओके नेटिव बर्ड माइग्रेटरी बर्ड ए सब जिंस सेठी अछंती ठीक अछि एंड आल्सो habitat to very important salt water crocodile salt water crocodile okay and one of the bhitarkanika hosts one of the largest population one of the largest population of salt water crocodile okay forgive for my bad handwriting जल्दी जल्दी साथ दवा ओके देन भीतर कनिका एठी आ गोटे एडिशनल पॉइंट रे आ गोटे पॉइंट को लिखि दबो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इंपोर्टेंट साइट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 रे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लो गोटे इंपोर्टेंट साइट भीतर कनिका ठीक अछि आउ कोन फोर्थ रिसर्च एंड एजुकेशन पई भीतर कनिका यूज होची थैंक्स फॉर रिसर्च करा होची एजुकेशन जो जाउ चंती पढिया पई ठीक अछि देन इको टूरिज्म ओके इको टूरिज्म प्रमोट होची ठीक अछि तो बर्ड वाचिंग हला किबा बोट ट्रिप्स हला ओके सो इको टूरिज्म रे कोन होची टूरिज्म पोटेंशियल प्रमोट होची एंड लोकल कम्युनिटी भी बेनिफिट होचन लोकल कम्युनिटी आर आल्सो बेनिफिटेड ठीक अछि अच्छा ठीक अछि देन आउ किछि पॉइंट भी अछि जोटा कि परीक्षा रे मने पड़ले तो बहुत भलो कथा ओके कल्चरल सिग्निफिकेंस भीतर कनिका रे मां काली टेम्पल अछि cultural significance okay people visit there frequently okay then historical significance okay historical significance कोन जेतले कनिका राजा थिले कनिका रिवोल्ट हेतला हिस्ट्री पढिथियो जे कनिका राजा थिले से कनिका राजा हेठी शिकार करे होतले ठीक अछि तो हेठी जो शिकार करे होतले तो सेठी तमे देखिबो हंटिंग टावर सब अछि ओके हंटिंग टावर सब अछि ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट द तात्पर्य द सिग्निफिकेंस ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क ओके so we have discussed the section a olive ridley tortoise okay olive ridley लिखो किसी असुविधा नहीं लिखि परिबो मगर सॉरी रोशन साइक्लोन सब लिख परिबो किसी असुविधा नहीं okay so these are the points which you can write regarding the questions asked in the section a of paper 1 ठीक अछि मेन एग्जाम रे माइंड को पॉइंट आसिले आंसर लिखि होबो ठीक अछि सेति पई तुमको सिंसियरली कहूची मेन एग्जाम पई बेसी पढनी ठीक अछि बेसी पढले परीक्षा होय सिलेबस रे जहा अछि नोट्स तैयारी करो घोसी की जा पाई के आसे ठीक अछि सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन thank you very much we will meet in the next session with the discussion of section B, group B.
paper 1. Okay, thank you.